I think this is a pretty big win for the Indian narrative right now. I mean, the Indian foreign minister said, yeah, this is what we've said all along. We had kicked out the diplomat. We had named, back in September, we had named the Indian High Commissioner. We had sort of started this publicly. जून 2023 में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में हरदीप सिंह निज्जर, जो एक खालिस्तानी समर्थक था, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। निज्जर लंबे समय से खालिस्तान आंदोलन का समर्थक था और भारत से अलग एक सिख राज्य की मांग कर रहा था। भारत सरकार उसे आतंकी मानती थी, जबकि कई लोग उसे सामुदायिक कार्यकर्ता के रूप में देखते थे। निज्जर 1990 के दशक में कनाडा गया और वहाँ खालिस्तानी विचारधारा को बढ़ावा देना शुरू की। वो कई खालिस्तानी संगठनों से जुड़ा रहा और कनाडा के सिख समुदाय में प्रभावशाली नेता भी बन गया। उसके खिलाफ भारत में कई हिंसक घटनाओं में शामिल होने का आरोप था, जिसमें बम धमाके और हत्याएं शामिल थीं। जून 2023 में हुई उसकी खुद की हत्या ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी। कनाडा ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की और भारत की खुफिया एजेंसी पर संलिप्तता का आरोप लगाया। इसके बाद कनाडा और भारत के बीच तनाव बढ़ गया। कनाडा ने भारतीय राजनयिक को निष्कासित कर दिया और इस घटना को लेकर दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव गहराया। हालांकि अक्टूबर 2023 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ ठोस सबूत होने का दावे को कमजोर किया, जिससे भारत के पक्ष में एक महत्वपूर्ण जीत के रूप में देखा गया। कनाडियाई पत्रकार डैनियल ब्रॉडमैन ने कहा कि ट्रूडो के बयान ने यह स्पष्ट किया है कि कनाडा के पास भारत के खिलाफ कोई ठोस प्रमाण नहीं था, बल्कि केवल खुफिया जानकारी थी। इससे भारत के पक्ष को मजबूती मिली, क्योंकि उसने कभी भी सीधे सीधे सबूतों की मांग को स्वीकार नहीं किया था। हाल ही में कनाडियाई पत्रकार डैनियल ब्रॉडमैन ने कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का हालिया बयान, जिसमें उन्होंने भारत के खिलाफ सबूतों को कमतर बताया, भारत के पक्ष के लिए एक महत्वपूर्ण जीत मानी जा रही है। डैनियल ब्रॉडमैन ने कहा, यह अभी भारत के लिए एक बड़ी जीत है। कनाडियाई नज़रिए से देखें तो हमने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया था। हम इतनी दूर चले गए थे कि हमने एक डिप्लोमेट को निकाल दिया। हमने भारतीय उच्च आयोग का नाम भी लिया और इस मुद्दे को पब्लिकली उठाया। फिर उनसे इसके बारे में पूछा गया और उन्होंने कहा कि हमारे पास केवल इंटेलिजेंस खुफिया जानकारी है। अगर भू राजनीतिक तकनीकी पहलुओं पर देखें तो भारत जीतती है, क्योंकि भारत ने कभी ये नहीं कहा था कि उसके पास ठोस सबूत हैं। उन्होंने आगे कहा, अंततः ये कूटनीतिक विवाद इस पर आधारित है कि हरदीप सिंह निज्जर एक खालिस्तानी था या फिर एक सामुदायिक कार्यकर्ता, और इस बुनियादी असहमति में कोई बदलाव नहीं आया। डैनियल ब्रॉडमैन ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयान पर भारत की प्रतिक्रिया को लेकर कहा, अगर आप एक कनाडियाई हैं तो यह सुनना अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब है कि जब तक जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री हैं, रिश्ते ठहरे हुए हैं। लेकिन यह संकेत भी देता है कि अगर सरकार बदलती है और कम विरोधी प्रशासन आता है तो चीज़ें फिर से सामान्य हो सकती हैं। लेकिन यहाँ ट्रूडो पर आरोप लगाया जा रहा है, जिन्होंने भारतीय राजनयिकों के खिलाफ ठोस सबूत होने का दावा किया था और फिर बाद में सिर्फ खुफिया जानकारी के आधार पर बात की। उन्होंने यह भी कहा, कहानी ये है कि यह एक बार का अपराध था जिसमें खालिस्तानी आतंकवादी नेता की हत्या में गैंगस्टर शब्द का उपयोग किया गया। कनाडियाई होने के नाते यह सुनना अच्छा है कि ट्रूडो सरकार के खत्म होते ही यह खत्म हो सकता है। अगर आप पोलिंग देखें तो लिबरल पार्टी किसी भी चुनाव में पूरी तरह से हारने वाली है। पार्टी में भीतरी बगावत चल रही है और इतने सारे स्कैंडल हैं कि यह भारतीय स्कैंडल अगले किसी स्कैंडल में कहीं ना कहीं किसी शोर में खो जाएगा, जो शायद अगले हफ्ते सामने आ सकता है। और यह भारत के लिए एक जीत है। कनाडा ठोस सबूत नहीं ला सका, ये केवल इंटेलिजेंस के साथ आया और भारत अपने स्टैंड पर कायम रहा। अंत में उन्होंने कहा, दुनिया क्या करेगी? भारत पर प्रतिबंध लगाएगी, भारत के साथ व्यापार युद्ध शुरू करेगी, जबकि ईरान, रूस और मध्य पूर्व के बाकी समस्याएं पहले से ही। I would like to have your reaction on Canadian Prime Minister Justin Trudeau admitting that, it has not provided India with that hard evidence and it was only based on intelligence. What will you say on that? Well, I think this is a pretty big win for the Indian narrative right now. I mean, the Indian foreign minister said, yeah, this is what we've said all along. So from the Canadian perspective, we had said we'd gone pretty hard. We had gone to the point we had kicked out the diplomat. We had named, back in September, we had named the Indian High Commissioner. We had sort of started this publicly. And the assumption from most Canadians is if you're going to go this far to kick out a diplomat, a Canadian example is if you play the game of Clue, you need, three things to win the game. You need Colonel Mustard in the conservatory with the candlestick, the three to win the game.
So what Canada has come out now that Trudeau's been put under oath because of all, the general foreign interference scandal, he was then asked about this, and he came out and said, we have intelligence. So he did say we have Colonel Mustard in the conservatory, and he's coming with two of the three. So on the sort of geopolitical technicality aspect, okay, India wins here because you never said you had evidence. But what does it change from like the grand structures of things? Ultimately, not that much, because the diplomatic spat is really about the unanswered question is, was Hardeep Singh Nijjar a Khalistani terrorist or a community activist? And that general disagreement has not moved. Right. I would also like to have a reaction on the Indian statement where, it has said that uh, whatever Trudeau has said, that this is what we have been saying since long, that there is no evidence provided to us. And now the responsibility for the damage that this behavior has caused to India-Canada relationship lies with Justin Trudeau alone. That's a very good statement to hear if you're a Canadian, because I think the signaling there is, okay, relationships, while Justin Trudeau is prime minister, are sort of in cryostasis. And it leaves the door open that if there is a change of government and a less generally hostile administration, deals can be made. We can all get back to normal, but they do lay the blame here at Prime Minister Trudeau, who, again, claimed to have hard evidence against Indian diplomats, and then came out with intelligence. And then the story of just, it was a one-time crime. Okay, they used gangsters to be part of an assassination of a Khalistani terrorist leader on Canadian soil. This is now broadened out to they're now behind in directing major gang activity, right? And this accusation comes out at the 11th hour. This is all sort of spiraling. And it is good to hear as Canadians that this can end when the Trudeau government ends, which a lot of us are kind of, if you look at the polling, the Liberals are about to get obliterated in any poll. There's an internal caucus revolts right now. There's so many scandals that this Indian scandal will be lost within the noise of the next scandal, which should debut in a week or so. That's, but a win for India. They didn't come out with hard evidence. They came out with intel, and India gets to stick to its guns. And what's the world going to do? Embargo India? Start a trade war with India while we have the problems of Iran and Russia and the rest of the Middle East to deal with? China? No, it's not gonna do it. Right. Daniel Trudeau has also said that Canada did not want to end up in the current state of tension with India. And he has said that my position and Canada's position is to defend the territorial integrity of India, adding that one India is our policy. But yet he has been supporting Khalistani extremism, giving space to terrorism. What is your comment on that? Trudeau says things, and then Trudeau does things. Oftentimes, what Trudeau says he is doing does not match up with the reality of what he is doing. So he might claim that he is against Khalistani separatism, but he would also promote Khalistani separatism. So I don't think it's outlandish to assume that he is in fact being untruthful when he says he is doing something when he is not doing that thing. And this is a common Justin Trudeau thing, which is again leading back to his scandals and unpopularity.